So my screen is visible. Yes. 1 second. Hmm. So पॉकेट मनी के बारे में anyone would like to speak anything or add anything? You guys must be familiar with this term, pocket money. Anyone? A kind of monthly or weekly allowance. Mm-hmm. Correct. So you guys get any pocket money from your parents, guardians? बोलो बोलो भाई. ये तो नो कर दो. अच्छा, थम्स अप थम्स डाउन कर दो. कुछ मिलता है पॉकेट Uh, मनी तो. Never actually. Only occasionally, like on festivals or something. ओके ओके. ओनली ऑन फेस्टिवल्स एंड कभी कोई गेस्ट आके कुछ देके चले जाए तो. Same. Exactly. ओके. मेरा भी सेम है. सो लेट्स मूव ऑन. मतलब मोटा माटी तो आप लोग को पता ही है पॉकेट मनी क्या होता है. सो आज थोड़ा बुकिश तरीके से पढ़ लेते हैं व्हाट इज पॉकेट मनी. So pocket money is a small amount of money that parents or guardians give to their children on a regular basis. It is usually given to kids to help them to learn about money and how to manage it responsibly. Pocket money is a great way for children to start learning about the value of money, saving and making choices about how to spend it. सो इट इज क्वाइट क्लियर कि मतलब इंडिया में इतना पॉकेट मनी का कल्चर नहीं है जितना रेगुलरली फॉरेन वगैरह में रहता है कि मंथली अलाउंसेस दे रहे हैं. बिकॉज उधर बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है स्पेशली आफ्टर 14-15 लाइक दे गेट देयर ओन पार्ट टाइम जॉब्स एंड अदर थिंग. बट इन इंडिया वी आर स्टिल in that culture and like you guys trying to promote that thing ki we can provide internship to the teenagers and other stuff. So pocket money से यूजुअली ऐसा डिराइव करा जाता है कि यंग एज से बच्चों को थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस. मीन जब तक उनका जॉब लगेगा 20-21 ईयर्स के होंगे सो दे विल बी वेल वर्स कि ओके हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट, हाउ मच आई नीड टू स्पेंड एंड अदर थिंग्स. And next, parents often give pocket money to their kids as a way to teach them important life skills. By receiving pocket money, children can learn how to budget and make decisions about what they want to buy. They can choose to save their pocket money for something they really want to spend it or on small things they need or enjoy. So वही जो मैंने बताया था कि you will learn how to budget your things कि मुझे कुछ बड़ा एक्सपेंडिचर करना है लाइक मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो मुझे पैसे जोड़ कर रखना है and I'll buy something lavish. तो we can save. Major concept वही है कि young age से pocket money देने का. So why we have to save pocket money? Saving pocket money is a valuable habit for children to develop because it teaches them important skills and provides them with financial security. Here are few reasons why children should save their pocket money. So we will be looking some of the reasons कि हमको pocket money क्यों save करना चाहिए. And we will understand कि savings की importance क्या है. Hmm. So one okay, 1 second. Hmm. So one of the reason is goals and aspirations, and another one is to teach financial responsibility. So goals and aspirations like if you are getting some amount daily and like if you want to purchase PS5 or want to go to a gaming parlor or go to bowling, so you know कि आजकल 600-700 रुपए it's cost for bowling. So what you can do is save a little amount every month and you can spend it with your friends in coming months. So you can set small goals for yourself. So saving money allows children to set goals and work towards them. They can save for something they really want like a toy, a game or a special outing. Like you can go for picnic and you can save for whatsoever reason you want. And it also teaches you financial responsibility. Saving pocket money helps children understand the concept of managing money responsibly. They learn that money is finite and needs to be allocated wisely.
आप लोग तो थोड़े ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो, बट कुछ कुछ छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मम्मी पापा पैसे ला के दे रहे हैं तो इट्स अनलिमिटेड, कि कुछ भी मांगो मिलता जाएगा. सो टू टीच दैट थिंग कि इट इज नॉट सम अनलिमिटेड थिंग, इट विल गेट ओवर in some time. So it will teach you financial responsibility ki not to spend money blindly and save some for future uncertainties. Next is valuing money. So saving pocket money helps children to understand the value of money. They realize that it takes time and effort to accumulate savings. So also we have a concept ki aap, if you do perform a specific household task, you will get some money. Like you might have seen in some web series and shows कि वहाँ पे ऐसा रखते हैं कि like if you watch the dishes today आपको इतना पैसा मिलेगा. So by doing such small tasks it will help you know the value of money and hard work कि अगर like it's not easy to earn money, and before spending it on some not so necessary thing you will think twice कि okay see मुझे इतना काम करना पड़ा तभी मुझे इतना पैसा मिल रहा है. So you will be more responsible and will start to value the money. Uh, So also saving pocket money will help you learn about long-term planning. Saving money from an early age encourages children to think about the future. They can start saving for larger purchase or even for their future education. Emergency fund saving pocket money provides a safety net for unexpected situations. So both of the points are like quite clear. The long-term planning, you will get to know the power of compounding. Okay, once you start saving money in some instruments like it could be a fixed deposit, or maybe park the money in just a saving bank account जहाँ पे आपको like around 2.5% interest मिलेगा. So once you start making money from the saved money, you will enjoy the process कि okay यार मेरे पास 5,000 रुपीज इकट्ठे हो गए एंड उसको मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है जस्ट बाय कीपिंग इट इन बैंक और फिक्स डिपॉजिट. और इफ आई अगर आपके पेरेंट्स आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं तो लाइक यू विल सी हाउ इट कंपाउंड्स इन म्यूचुअल फंड्स. So, and for emergency funds, saving pocket money provides a safety net for unexpected situation like any medical emergency कुछ भी हो जाए तो you will have some cushion for it. And the third point is encouraging children to save their pocket money helps them develop crucial financial skills that will serve them well into adulthood. It sets the foundation for responsible money management, goal setting, and financial independence. So, in 6 point में किसी को कुछ doubt या like from start to end if you have any queries about pocket money and like what can be the features. In FD or things like that or savings account, because of inflation, our money is going down other than going up. Na? Yep. So if we like calculate net to net, so inflation rate is around 7.5%, and if we see FD rate is around 6 to 7% depending upon how much tenure you are taking. Like अगर 3 साल का करा रहे हो 5 साल का करा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. And after that also on FD interest टैक्स भी लगता है. तो 6% यू आर अर्निंग एंड उस पर यूजुअली आजकल सबको 30% स्लैब रेट में आते हैं. लाइक जो भी आप इनकम करोगे उस पर 30% टैक्स भरते हो. So if you are having a FD of 1 lakh rupees and उस पे you get interest of 6,000 rupees, तो 6,000 rupees में से भी आपका 30% चले जाएगा. So वो कितना हो जाएगा? सो 1,800 रुपये उसमें चले जाएंगे टैक्स में, 1,800. सो बैलेंस फिगर बचेगा. सो दैट विल बी like if you will compound it compare it with the inflation rate कि inflation 7% है. तो आज जो like first understand the concept of inflation. जो रुपीस के वैल्यू आज 1 लाख रुपए की है, अगले साल 1 लाख की कीमत 7% से बढ़ जाएगी. लाइक यू शुड हैव 1,07,000 रुपीज टू परचेज द सेम थिंग. Like if you want to purchase a car of 1 lakh, next year it is going to cost you for 1,07,000. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है. सो अगर आप 1 लाख रुपए एफडी में डाल के छोड़ दोगे, सो यू वोंट बी बीटिंग द इन्फ्लेशन. आपको अराउंड 4,800 रुपीज मिल रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर तक आपका 1 लाख का अमाउंट हो जाएगा 1,04,800, विच इज लेस देन द इन्फ्लेटेड अमाउंट ऑफ 1,07,000. So basically you are in net loss of 3.5K. Okay. So but uh, what FD offers is a safest asset class कि इसमें
your money is not going anywhere, and whenever you will want to withdraw, you will get it. So you will see like a lot of old people and retired people investing and parking their money in FD because they might need money anytime. Compared to stock market or mutual funds, there could be instances जहाँ पे all of a sudden stock market might have crashed 20-25% and you want to withdraw. So you would be getting very less money. Okay. That's clear, Karamveer? One more thing, like 30% income tax slab is for 15 lakhs above, na? No, no, no. It's about 10 lakh. So we have different rates like 5 lakh to 8 lakh. It is some amount, and 8 lakh to 10 lakh is different. So we have two tax regimes going on. So in old tax regime, about 10 lakh, it is 30%, and in the new tax, it's about 15 lakh. So 50 lakh tak to they start charging you additional surcharge. So it's even more than that. Okay. So yeah, let's move on to next slide. So how we will save pocket money? So one is piggy bank or savings jar. Second is saving bank account, and third is saving apps or digital platforms. So as you all know, piggy bank or what we can say gullak, you might have heard this terminology, जो easily आपको मिल जाता है market में. So using a piggy bank or a saving jar is a classic and a simple way for children to save money. They can deposit their pocket money into the piggy bank regularly and watch their savings grow. So this is the क्यों मतलब बहुत इजी वे टू स्टोर योर मनी लाइक. बट इसमें थेफ्ट हो सकता है, आपके मम्मी पापा कभी भी आपसे पैसे ले सकते हैं आपके वापस कि इसका गुल्लक भर गया भैया, इसके पैसे ले लो. तो बट वो आपके सामने रहेगा एंड यू कैन एंजॉय इट ग्रो कि चलो भैया 1000 रुपए हो गए, 2000 रुपए हो गए, मामा ने दे दिए, नानी ने दे दिए. एंड सेकंड इज सेविंग अकाउंट. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट और you guys are yet to have an saving account? Do you have? Yes, I think I have. You have? Nice, nice. Other Ronak, Chetan, Yeah, Neha, I Harshit, also have, but it's not like used like regularly. not much active. Yeah, Open करा yes, हुआ है बस. Okay, okay. पड़ा हुआ है. हाँ. Parents can open a saving account for their children at a bank. This provides a safe place for children to store their money and introduce them to the concept of banking. They can deposit their pocket money into the account, and it also allows them to earn interest on their saving. So saving bank interest is around 2.5%, varying upon bank to bank. Like some PSU banks, matlab SBI and sort of banks will give you around 2.5. Private banks will give you around 3%. So you can have some mm, like obviously it is not very much high amount of interest, but comparing to a full grown individual जिसको सारी चीजों का नॉलेज हो, मतलब आपके एज पे सेविंग बैंक अकाउंट इज ऑल्सो बिग डील कि उसमें अकाउंट खोल के यू कैन मैनेज योर फंड्स. एंड आई थिंक आजकल तो किड्स के लिए भी दे इशू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड विच यू कैन यूज इन फॉर पेइंग योर ट्यूशन फीस एंड school fees. So let's see saving apps or digital platforms. There are various saving apps or digital platforms designed specifically for children. These platforms provide a user-friendly interface and allow children to track their saving, set goals, and even learn about financial concepts through interactive features. So a lot of big banks like Kotak Mahindra Bank, and few broker like ICICI Direct, Zerodha have started giving a feature to open a separate account for kids, जहाँ पे ये they also give you financial literacy कि okay now you have 5000 rupees, उससे आप ये चीज परचेज कर सकते हो. मतलब they show you equivalent amount of products कि okay now you have saved 5000 rupees, तो आप एक PS5 का गेम का पैसा खरीद इकट्ठा हो गया है. जब आपके 10-20 हजार रुपए हो जाएंगे तो you can purchase something, you can purchase a gear wali cycle and other things. So they will show you and will motivate you to save more and more money. So these are some saving applications or digital platforms which you can use for managing your finances. So next topic is where we were using our pocket money now. तो अभी आपको अगर पॉकेट मनी मिलता है तो आप कहाँ पे स्पेंड करते हो उसको? लाइक घर वाले ले लेते हैं आपसे, या यू गेट टू हैव इट, यू लाइक यू गेट
टू स्पेंड इट, आइसक्रीम खाने मिल जाता है या खर्चा करते हो, पार्टी करते हो फ्रेंड्स के साथ? व्हाट डू यू गाइस डू? Like I keep the money that I get, like I keep it myself and spend it for myself. Like last year, I also got a gold as a physical investment format. ओके ओके, नाइस। Hard. रौनक? Yeah, same for me. I just keep it saved, and सेफ? like occasionally I keep spend some on like clothes or something ओके ओके, on नाइस। myself. हम्म। So in this slide, like we are basically talking ki where we are using pocket money, so we should be more responsible in our spending and not waste our money on uh, some impulse buying, or like purchase only those things which we have. Like if you have sufficient clothes, don't like जैसे इसमें you can see the picture of Almira कि कपड़े रखने की जगह ही नहीं बचे, इतने कपड़े नहीं लेना पॉकेट मनी से। एंड ट्राई टू अवॉइड परचेसेस इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक गिविंग सुपर चैट्स टू स्ट्रीमर्स एंड व्हाट वी कैन स्पेंड। यप। एंड ठीक है, बाकी तो फास्ट फूड वगैरह तो आई विल नॉट डिस्करेज, खाओ मजे करो। एंड नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम आर आल्सो लाइक बेसिक नेसेसिटी नाउ, बट वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन आवर एक्सपेंसेस। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। सो हाँ, सो वेयर कैन वी इन्वेस्ट अवर मनी? नेक्स्ट लेट्स सी। So if you start cutting down your expenses, like if you're purchasing extra 3 4 dresses, then like you can stop it to 2 to 3 dresses. You can make small investments in various things, like you can purchase some small stocks, like बहुत महंगे stocks तो definitely you cannot buy from your pocket money, but you can try to find some value stocks which are trading below 500 rupees, and you can purchase few quantity of them. Then you can purchase gold. So you will think कि gold इतना महंगा आता है तो हम कैसे purchase करेंगे? So there is a concept of gold coins. So you don't need to go and purchase 10 gram 20 gram gold. Gold coins start as low as 5,000 6,000 rupees. So they will reduce the size of coin and give it to you. And also there are online form of gold that is called sovereign gold bonds. So that is also a very good way of investing. वो आपको डीमैट अकाउंट में परचेज कर सकते हैं। So what happens in sovereign gold bond is like उसमें एक गोल्ड बॉन्ड आता है अराउंड 5 to 6,000 रुपीज का, एंड उस पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। एंड जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती जाती है, उसका प्राइस भी बढ़ते जाता है। एंड वो 5 years बाद यू कैन रिडीम इट, लाइक उसका पूरा पैसा आपको मिल जाता है वापस। तो फॉर सपोज अभी 5,000 में लिया है एंड गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो वो 8,000 9,000 का हो जाएगा 5 साल बाद। एंड इन एडिशन टू दैट आपको हर साल उसमें 2.5% का इंटरेस्ट मिला है, दैट इज टैक्स फ्री। सो दैट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, एंड you can put the money in deposits like fixed deposit, bonds, treasury bills. Hmm. You can purchase currency, you can visit local forex agents, so you can purchase dollars from them ki okay, currency change is 84 rupees only, so 100 rupees mein you can get around $1.25. So yep, you can invest in dollar if you want. And next is you can invest in education, like you have purchased this course from UA, you can purchase other courses as well from all the publishers, or you can have all paid courses and application subscriptions which help you in financial literacy. So any doubts in where should we invest our money? How can we buy sovereign gold bonds and treasury bills? So ये दोनों आपको ब्रोकर से मिलेगा। सो वंस यू ओपन अ डीमैट अकाउंट, सो लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओ होता है, एंड गोल्ड बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, इन तीनों का एक सेपरेट पेज रहेगा हर एप्लीकेशन पे। तो गोल्ड बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स आर नॉट सच थिंग्स जो आपको हमेशा मिल जाएगा 365 days। दे आर ओपन फॉर लाइक वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब भी गवर्नमेंट को पैसा लगता है दे इशू गोल्ड बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। So you need to check like every 10 15 days, and once the window opens कि okay एक sovereign gold bond open हुआ है, so the window will be there for like 10 15 days। ऐसा नहीं रहेगा आज खुल के कल बंद हो गया। So they give you 10 15 days to decide if you want to invest or not। And also you can visit your bank में भी they advertise a lot about sovereign gold bonds। So
अगर आप बैंक विजिट करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, लाइक इफ दे आर विजिटिंग बैंक वंस अ मंथ, ट्राई टू गो विद देम to understand what is going on, like what all windows are there, what all schemes are going on there. You might catch an eye, like जब भी आपके पेरेंट्स जाएंगे बैंक, दे विल बी इन हरी, ओके मुझे पैसे डिपॉजिट करना है, पैसे निकालना है, दे विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड कम आउटसाइड द बैंक। बट जब तक वो लोग वो प्रोसेस करते रहेंगे, यू विल हैव टाइम टू लाइक देखते रहे चारों तरफ क्या चल रहा है भाई, क्या बोर्ड लगे हुए हैं, दे हैव सम इंटरेस्टिंग स्कीम्स और नॉट। यस रौनक। Is there any like minimum value for sovereign gold bond? You can purchase even a single sovereign gold bond which is around 6,000 only. Like it depends on the rate of gold. So currently rate of gold is 65,000 for 10 grams. So you can purchase 1 gram. So it will come around 6,500 as per current rate. So अभी next year आएंगे I think gold bond. So next year it might be around 7,000, 7,500 something. And if you don't want to wait for gold bonds, just visit a local jeweler, like jewelry shop पे जाइए and ask them कि I want a 1 gram gold coin, or you can ask for silver. Silver थोड़ा सस्ता है comparatively, so you can invest in silver as well. The increase in the value of gold, like if we buy a sovereign gold bond, is it taxable? Like gold was So 6,000 when I bought it, and now it's 7,000. So yeah, that is taxed. yeah. Difference of 1,000 is taxable, but the interest the government is giving you of 2.5% per year in gold bonds, that is tax free. Otherwise, like if you are investing in saving bank account and getting saving bank interest or FD interest, you will that is completely taxable. So in investing in gold bond is beneficial because वहाँ पर आपको 2.5% का interest मिल रहा है, which is tax free. Also your money is growing at par with the inflation. Like gold usually appreciates around 12% every year, so that is decent enough. हाँ, बोलो बोलो। How does the growth of silver compare to like growth of gold per year? Sil uh, like silver is relatively slow growing asset. Like if you compare gold, थोड़ा ज्यादा रेयर एसेट क्लास है। एंड जो भी हर कंट्री की जो बैंक्स रहती है, लाइक जो फादर ब्रांच है, जैसे इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, यू माइट हैव हर्ड, कि जो सब बैंक्स का कंट्रोल देखती है एंड इंडिया की इकोनॉमी का पूरा मैनेजमेंट करती है। तो हर कंट्री के कैसे आरबीआई जैसी बैंक है, यूएस में फेडरल बैंक है, जापान में सेंट्रल बैंक से बोलते हैं उनको। सो ऑल दीज बैंक्स व्हाट दे डू इज दे कलेक्ट गोल्ड फॉर रिजर्व, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी जो यूनिवर्सली ट्रेड हो सकती है, कि इफ आई डोंट वांट टू पे यू बाय डॉलर, आई विल पे यू बाय गोल्ड, क्योंकि डॉलर इज यूनिवर्सल करेंसी। बट if you want to trade, have a trade with Iran, so Iran is having disputes with USA, so Iran won't accept dollars, कि हम डॉलर का क्या करेंगे, हम तो हमारा मार्केट में हमसे कोई लेगा ही नहीं। तो दे विल आस्क यू फॉर ऑल्टरनेटिव करेंसीज। तो इधर आपकी कंट्री की करेंसी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक इफ यू विल से कि हमको आपसे ऑयल खरीदना है एंड वी विल पे यू बाय इंडियन रुपीज, तो वो इंडियन रुपीज तब मिलेगा जब उससे कोई दूसरे कंट्री इंडियन रुपीज लेने को तैयार है। अगर वो इंडियन रुपी ले लेगा बट उससे कोई ले ही नहीं रहा है, मतलब लाइक यूजुअली ट्रेड्स डॉलर में इसलिए होते हैं कि लाइक इफ यू वांट टू परचेज फिशेस फ्रॉम श्रीलंका, तो हम उसको डॉलर में पे करेंगे, श्रीलंका के पास डॉलर आया तो वो ताइवान से कुछ भी टेक्नोलॉजी खरीद सकता है डॉलर देके। बट हमने उसको इंडियन रुपी दे दिया, बट ताइवान को इंडियन रुपीज चाहिए नहीं है, तो श्रीलंका के लिए एकदम वेस्ट रहेगा वो। तो गोल्ड इसलिए इतना ज्यादा वैल्यू करा जाता है क्योंकि इट इज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी फॉर ट्रेडिंग। Other countries exchange their goods and services by using gold as well if dollar is out of picture. But is silver like still above the inflation rate USA? Like silver will also grow around 10.5 percentage, but like if you are investing, so people prefer gold more. And also in India it's like gold ज्यादा सुंदर दिखता है ना, क्योंकि चमक रहा है, दूर से चेन दिख रही है, कड़ा दिख रहा है, तो that's why like you won't see anyone wearing silver ornaments apart from pile and bichudi like our mummy log wear. Baki you won't see any silver ornaments in market. Very rarely they are used. So this was between gold and silver, and we completed. You can invest in education and financial applications. You can take subscription of newspapers like Economic Times, Business Standard. अगर आपको if you have interest in finance and other things, so you can take application subscriptions of those.
सो देर ऐसे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि व्हाट how should we allocate our money, like if I'm getting 100 rupees, how should I allocate allocate it towards my saving and other things. So there is a rule called 50-30-20 rule. So keep 50% of your amount for your needs, like your basic needs. आज हम दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले हैं, like every week we go to play badminton or anything, you keep 50% of amount reserved for that. Save 20%, like 20% amount you invest in like what the instruments which we discussed, gold, FDs and other thing, and keep 30% for wants. Oh sorry, मैंने need और wants को गड़बड़ कर दिया. So needs is like basic necessities, कि इसके बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं. So need और wants में ये फर्क रहेगा कि नीड ऐसी चीज है कि जिसके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता. लाइक इफ वी टॉक इन एडल्ट पर्सपेक्ट कि घर में खाना नहीं होगा तो उसके बिना काम चल ही नहीं सकता. सो वी नीड टू परचेज व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सो दैट विल गो इन नीड्स कैटेगरी. वांट्स इज योर इंडिविजुअल चॉइस कि मुझे तो बैडमिंटन खेलना ही है भाई हर हफ्ते, तो आई विल गो टू टर्फ एंड keep that amount reserved for playing badminton or cricket, or it could be any other type of want, like if you want to do every weekend party and other things. So these are not basic necessities, इसके बिना आपका survival पे क्वेश्चन नहीं आएगा, but these are the things you want to do because you like them. And 20% you should always save, like save in whatever instruments you like. So any question in the 50-30-20 rule? No? Yeah. सो एक बुक है कंसेप्ट, रिच डैड एंड पुअर डैड करके. सो उसमें समझाया गया है कि concept of wealth generation and what is the difference between psychology of a poor dad and a rich dad. Like दोनों के बच्चे रहते हैं इस बुक में, एक रिच डैड रहता है, पुअर डैड रहता है. सो दोनों का साइकोलॉजी समझा है कि व्हाट पुअर डैड इज ट्राइंग टू टीच हिज सन एंड व्हाट इज रिच डैड ट्राइंग टू टीच. आप लोग ने पढ़ी क्या ये बुक, और हैव यू हर्ड अबाउट दिस बुक? I have read it. यू हैव रेड इट, नाइस नाइस. तो आगे की क्लास करमवीर कंटिन्यू कर देंगे भाई. Robert Pinsky says, "Don't go to school." अच्छा नहीं नहीं भाई, वो सब चीजें मत पढ़ो उसकी. सो विल एक नया कंसेप्ट निकालना पड़ेगा, मिडिल क्लास डैड, सो जो सब हम सब पे एप्लीकेबल हो सकेगा. सो लेट्स सी व्हाट we will summarize the book in few quick slides, and if you guys get time, do have a read. The concept of rich dad poor dad is a popular financial mindset introduced by Robert Kiyosaki in his book of the same name. The book presents the contrasting financial perspective of two father figures. The author's own father, poor dad, and a traditional mindset focused on job security and a steady income, and his father and his friend's father, rich dad, who had a more entrepreneurial and well-building mindset. So उसमें उसने रॉबर्ट ने बताया कि मेरे पापा पुअर थे एंड उसके फ्रेंड के पापा जो रिच थे, तो दोनों के माइंडसेट में कितना फर्क था. तो लाइक इन बुक इट इज इजी टू से कि आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखो या वेल बिल्डिंग पे फोकस करो, बट इफ वी कंसीडर फॉर लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर सॉर्ट ऑफ पीपल, तो उनके लिए ये सब चीजें इतनी आसान नहीं रहती बिकॉज उनका सर्वाइवल ही स्टेक पे रहता है. सो दे कैन नॉट गो ऑन इन्वेस्टिंग इन हाई dividend paying instruments or high return instruments because they might need money anytime because their sources of income are very limited. So we'll see lessons from rich dad and poor dad. So financial education. The book emphasizes the importance of financial education, arguing that traditional schooling often does not teach individuals about money management, investing, and building wealth. Kioski suggests that individuals should seek to continuously educate themselves about finances to make informed financial decisions. सो जो स्कूलिंग का पार्ट वो जो मना कर रहा था कि स्कूल नहीं जाना है, उसमें उसका ये कहना था कि स्कूल्स में दे डोंट टीच अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट. अगर होगा भी तो बहुत छोटा सा टॉपिक हुआ होगा बार्टर सिस्टम के बारे में एंड टू टीच द हिस्ट्री ऑफ द मनी, बट दे डोंट टीच स्पेसिफिकली कि हाउ यू लाइक दिस करिकुलम शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एज वेल जो अभी अपन कर रहे हैं. तो ही सेइंग स्कूल्स में दे शुड इंट्रोड्यूस मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग वेल्थ, सो बच्चों को स्मॉल एज से पता रहेगा. एंड
कोई टॉपिक स्कूल में पढ़ाते तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कस अमंग देमसेल्व्स कि हमको ऐसा पढ़ा है ऐसा करा, तो उनको दे गेट टू लर्न मैनी मोर थिंग्स. Second is mindset shift. The book encourages to mindset shift from being an employee to becoming an investor or entrepreneur. Kioski suggests that individuals should aim to build assets that generate income and appreciate in value rather than relying solely on earned income from a job. So ये बताना चाह रहे हैं कि you should start investing at a very young age. Um, एंड जब आपके इन्वेस्टमेंट थोड़े थोड़े ग्रो होने लगेंगे, सो यू विल गेट लॉट ऑफ अदर इनकम फ्रॉम them. Like if you are investing in good stocks, they will start paying you dividends. If you are investing in real estate, like you can get rental income from it. So it will help you in future. Like if you are having a job, you are getting 1 lakh income from your salary per month, you will be getting 5 and 20,000 income just from your dividend or rent, which will help you लाइक इन आपके डेली खर्चे कवर उससे हो जाएंगे, जो आपके पैसिव इनकम बोलते हैं उसको, जो डिविडेंड इनकम होती है एंड रेंटल इनकम होती है. सो दे आर ट्राइंग टू चेंज द माइंडसेट कि स्टार्ट यंग, इन्वेस्ट यंग, सो यू कैन रिटायर अर्ली. सो एनी डाउट इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड माइंडसेट शिफ्ट? So let's move ahead. So they are also talking about building assets, leveraging debt and financial independence. So building assets के बारे में पढ़ते हैं. He is highlighting the importance of building assets such as real estate, stocks and businesses that generate passive income and increase in value over time. He advocates for acquiring assets that generate cash flow to achieve financial independence. तो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी बहुत अर्ली एज पे, when they were young, so when they will grow you will get a lot of dividends and rental income. Next is leveraging debt. Kioski discusses the strategic use of debt to acquire income generating assets. He suggests that leveraging debt intelligently and responsibly can be a powerful tool for wealth, but caution against excessive debt and unwise financial decisions. So leveraging debt is a very important term to understand. उसमें ये हो सकता है, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट आप क्रेडिट लिमिट लीजिए, मे बी आप क्रेडिट कार्ड से लो या करंट अकाउंट खुलवा बैंक अकाउंट में, वहां से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लो एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू पे. सपोज आपने एक पर्सनल लोन ले लिया है बजाज फाइनेंस से एंड दे हैव गिवन यू फॉर 10 लाख रुपीज एंड आपको वो बोल रहे हैं कि आपको साल भर में 12% इंटरेस्ट देना है, तो आपका 1,20,000 रुपए तो इंटरेस्ट में जाएगा. सो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढने हैं जो आपको 12% के इंटरेस्ट से ज्यादा इनकम अर्न करके दे दे. फॉर सपोज आपने कोई ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया जो क्वार्टरली 15-20% ग्रो हो रहा है, या जिसके डिविडेंड यील्ड मतलब जो हर क्वार्टर में आपको 15 से 20% डिविडेंड पे कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 10 लाख का लोन उठा लिया बजाज फाइनेंस से, उसको आपको 1,20,000 ही देने हैं, बट आपने वो 10 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करा है जो आपको हर क्वार्टर में 30 से 40 हजार रुपए कमा के दे रही है, या साल भर में वो 1,20,000 से बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे रही है. सो दैट इज लिवरेजिंग दैट. So, and next they are teaching about financial independence. So the book promotes the idea of achieving financial independence, where your passive income from assets covers your expense and frees you from relying on a job or active income. The author encourages individuals to work towards achieving financial independence through investing and building wealth. So as I mentioned कि आप अपने पैसिव इनकम इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो आपके डेली डेली नीड्स के खर्चे हैं वो उससे निकल जाए. रेंटल इनकम से आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाए, डिविडेंड इनकम से आपके फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हो जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएगा. लाइक यू कैन, लाइक पर्सनली व्हाट आई डू इज, जब भी मैं फ्यूल भरवाता हूँ तो आई आई मैं पेट्रोल भरवाता हूँ बीपीसीएल के पंप से. सो जितने भी अमाउंट का मैं कार में फ्यूल डलवाता हूँ, लाइक सपोज इट इज 5,000 एक बार फुल टैंक करवाया, तो 5,000 के नेक्स्ट डे परचेज स्टॉक्स ऑफ भारत पेट्रोलियम. सो जितने भी पेट्रोलियम कंपनीज है, इंडियन ऑयल, आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल,
they are high dividend yield companies. Like they are cash rich companies. इनके पास इतना cash आता है and they pay you back by way of dividend. So what happens is every 3 quarter, so every 3 months I get around 15-20,000 dividend from BPCL and my fuel expenses are covered from there only. So any doubts in building assets, debt and financial independence? How can like we build assets with our pocket money? हाँ, so like I mentioned कि आप इतने बड़े सेट तो नहीं कर पाओगे. Like if I say you कि buy a stock of TCS, so वो खुद ही 4,000 का है. So you will need to identify some small stocks which are like trading around. Like I mentioned, Indian Oil Corporation. So that is a good company. That is a government-owned company. So you know it is not going to shut down or anything is going to happen, and it is selling a product which will never expire. Like you will always need fuel, and if you think electrical vehicles are going to take you over, so they will open electric stations on their petrol pumps, so they are never going to run out of business. So uska stock around 180-170 rupees पे trade कर रहा है. So like 1,000 रुपए इकट्ठे हो गए, तो you can purchase 10 stocks and you can like purchase such small assets. So by the time you reach 2025, you might be having like every month, if you are trying to save 500 rupees of pocket money and purchasing stock, like कैलकुलेट आप लोग की एज कितना है अभी? 15. 15. सो लाइक 5 years में आप हर महीने भी करोगे तो 60 महीने हो गए. 60 months में आप 1,000 रुपए सेव करोगे तो 60,000 रुपए तो ऐसे ही हो गए. तो लाइक स्मॉल स्मॉल करके यू कैन मेक अमाउंट. And also 60,000 will grow along with the stock prices going up and other things. You will get dividend income which you can reinvest. So this is what compounding is. कि you invested 1,000, आपका investment 1,100 हुआ, so you will invest 1,100 next time. तो वो 1,100 का फिर 1,300 होगा, 1,300 से 1,700 होगा. So yep. Should we move to next slide? It's clear. Yes. Differentiating assets and liabilities. So the book emphasizes the need to understand the difference between asset and liabilities. According to author, assets are things that put money in your pocket, while liabilities are things that take money out of your pocket. He advises individuals to focus on acquiring income generating assets rather than accumulating liabilities. Like he's saying कि आप फोकट का शोषा करने के चक्कर में don't increase your credit card bills. Like if you are taking any loan, leverage it properly. Otherwise, you might end up in trouble by what was the term used? Hmm, excessive debt हो जाएगा आप पे, ठीक है. So you guys know what is the meaning of asset and liability? Yes. Okay, nice. So asset is something which you own and you can have the ownership. Liabilities is which you need to pay to someone else. So see, अच्छा खत्म हो गया. So this was all about pocket money. So thank you. Like you can ask all the doubts of this session if you have any. And if you want to share your any personal experiences like regarding pocket money or any queries, you're free. Feel free to go ahead. I have a doubt from a previous session. बताओ. What is NBFCs, like bank wale part mein? So NBFC stands for non-banking financial corporations. So uh, it, you can acquire loan from two financial institutions. One is banks, जो आपने नाम सुने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये प्रॉपर बैंक्स है. एंड बैंक्स क्या करती है, वो आपसे डिपॉजिट्स लेती है. लाइक यू कैन कीप योर मनी इन सेविंग बैंक अकाउंट, यू कैन डू योर FD देयर एंड दे विल गिव यू लोन एज वेल. सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करते हैं, लाइक दे डोंट टेक ओपन योर सेविंग बैंक अकाउंट्स, they don't give you fixed deposit facility. They are NBFCs. They only give you loans and credit, uh, be it for business, be it for personal, be it gold loan or anything. So those are NBFCs. One of the famous NBFC is Bajaj Finance, जिनके फोन आते रहते हैं आपके घर वालों को कि हमने आपको क्रेडिट लोन दे दिया है. So yeah, this is the difference between bank and NBFC. NBFCs have to follow RBI guidelines. Yes, they also have RBI guidelines to follow.
उनकी थोड़ी अलग रहती है, बट दे हैव टू फॉलो। हाँ रौनक भाई। How long should we like keep our money invested if सॉरी। we're investing into a small stock? How long should we keep it invested for? First we need to define a criteria, like why are we investing in those stocks. If your vision is for creating wealth, so you need to do is do a good fundamental analysis, like जैसे मैंने आईओसी के 4-5 पॉइंट्स बताए कि वो कंपनी कभी बंद नहीं होगी। स्मॉल स्टॉक्स doesn't mean penny stocks, like penny stocks are the companies which are struggling. They are available at cheaper rate because they are struggling and they might shut down. फॉर लाइक वी हैव वोडाफोन आइडिया जो 12-15 रुपए का है, स्टॉक है, तो आइडिया 15 रुपए पे है, तो इसका मतलब नहीं इसको जाके खरीद लें, वो 15 रुपए पे एक रीजन के कारण है, क्योंकि द कंपनी पे लोन बहुत है एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू पब्लिश प्रॉफिट्स। तो हर इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं ग्रो करेगा, सो यू नीड टू क्वार्टरली चेक द बैलेंस शीट्स जब। Should we like diversify? क्योंकि इसमें फायदा होगा कुछ डिवाइस डाइवर्सिफाई करने का अगर पहले इतना स्मॉल प्रिंसिपल है। नहीं नहीं, उसमें आई थिंक यू शुड स्टिक टू 1 or 2 इन्वेस्टमेंट्स ओनली। लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग अमाउंट लेस देन 10,000, यू शुड अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन। कि पिक अप अ गुड स्टॉक, उसी को खरीदते रहो एंड फोकस ऑन इट। अगर उसमें भी लाइक आपने 3 स्टॉक्स में पैसा बांट भी दिया एंड 4 साल बाद आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देता तो बहुत ज्यादा ग्रेटर रिटर्न मिलता। कि लाइक 2,000 का डबल भी हो गया तो 2,000 का 4,000 ही हो रहा है ना, अगर पैसा आपने डबल भी कर लिया तो। बट इन केस अगर आप 2-2 हजार करके 6,000 एक ही स्टॉक में डालोगे तो 6 का 12 होगा, सो दैट वुड बी मोर रिवॉर्डिंग। 3 स्टॉक्स आप पिक करोगे उसमें से ज्यादा चांसेस है कि एक फेल हो जाए, एंड आइडेंटिफाइंग जस्ट वन गुड स्टॉक इज वे इजियर देन आइडेंटिफाइंग 3 गुड स्टॉक्स। सो एंड but once your portfolio goes above 50,000, 1 lakh, you should definitely diversify in among different asset class or different type of stocks, maybe IT companies, banking stocks, government stocks. Yeah. What is the starting point for a treasury bill, like minimum investment? 10,000, 10,000, 10,000। Government bonds? सबका 10,000 ही है। They start with 10,000. In multiple of 10,000 you can purchase like 10, 20, 30, 40, 50। ऐसा नहीं है कि 15 का खरीद लें, it will be in multiple of 10,000। Any more questions? Chetan, Neha, Harshita, do something if you are still there. Hello. Okay. नेहा, चेतन, यानी ऐसा तो कर दो। हाँ, कोहली साहब, भाई खाना वाना खाने तो नहीं चले गए? कोहली साहब को अनम्यूट नहीं कर सकता क्या मैं यहाँ से? सर यहाँ पर ही हूँ। वहीं पर हो, ठीक है भाई। कोई डाउट आउट तो नहीं है आपको? नो सर। क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं करूँ? सर कोई भी कंपनी नहीं है। नहीं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक that was much from my side. I think I'll ask Sakshi what to do next. Once again. हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे सीधे राइज हैंड के 4 तो लोग हैं भाई। What broker would you like suggest starting out? Sorry. Online brokers. What online brokers would you like suggest? Zerodha is having very user friendly interface, and like it will be easy to understand. If you will go to traditional brokers, उनके इंटरफेस इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है, लाइक HDFC सिक्योरिटी और ICICI डायरेक्ट। सो दे आर बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो 30+ ईयर के लोगों के ही रिकमेंड करते हैं कि घूमना जाए उसमें। बट Zerodha एंड ग्रो ऑल्सो इज गुड, सो दिस टू आर गुड। एंड ऑल्सो Zerodha सपोर्ट्स अकाउंट ओपनिंग फॉर माइनर्स, सो आप लोग उसी में खोल सकते हो। ग्रो पे नहीं है शायद माइनर्स का अकाउंट ओपन करने का।
And Upstocks is also there, but uska fees is comparatively more. So annual maintenance charges and other things. So Should we diversify among like stock market and other things? yes, you should definitely do that because uh, जैसे अभी कोविड आया था एंड लाइक इजराइल और किसका वॉर चल रहा है, पैलेस्टीन वॉर वाज स्टार्टेड एंड यूक्रेन रशिया के वॉर स्टार्ट हुए थे। जब भी इसमें कुछ भी ग्लोबल टर्बुलेंस आता है इकोनॉमी में कि दिस आर द थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लाइक इंडिया इसमें कुछ कर नहीं सकता भाई, बाहर युद्ध हो गया, अब हम क्या करें। तो ऐसे केस में वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट गिरते हैं, बट स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, क्रिप्टो करेंसी भी गिरती है जब ये वॉर स्टार्ट होता है या कुछ पेंडेमिक आता है या एनी कोई ऐसा रीजन रहता है। तो बट ऐसे केसेस में जो गोल्ड रहता है इट स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग, गोल्ड ऊपर जाता है बिकॉज ऑल द रिजर्व बैंक, जैसे मैंने बताया था, इंडिया की आरबीआई, यूएसए की फेडरल बैंक, दे स्टार्ट परचेसिंग गोल्ड बिकॉज दे डोंट नो कि इस वॉर का कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। लाइक इट कुड गो एज फर्ज एज कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, सो no one will be accepting currencies. So only valuable thing left will be gold and crude oil, जो कि petroleum है. So these two things shoot up whenever global uncertainty is there. So diversification is must कि like सारा पैसा equity में फंस जाएगा तो in such times you won't have anything to sell out. So in that case you can sell your gold or silver or such things. Best time to buy a stock during a crash, na? Like when But prices are. crash are very rare. Like जो if you are thinking about 50-60% crash, तो वो 4-5 साल में एक बार या 6-7 साल में एक बार इसकी अपॉर्चुनिटी आती है एंड you need to be very brave at that time to buy stock. Like in 2020 market was crashing in front of us, like stocks were available at so cheap valuations, but at that time life was so uncertain. Like don't think it from today's point of view, think on March 2020, like पता ही नहीं है अब आगे स्कूल जाने मिलेगा कि नहीं कॉलेज होगा कि नहीं। एट दैट टाइम सर्वाइवल वाज एट क्वेश्चन, देयर वाज सो मच पैनिक इन द मीडिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा इतने लोग मर जाएंगे। सो एट दैट टाइम यू विल थिंक नहीं भाई बैंक में पैसा बढ़ा रहे तो ही सही है कहाँ इसमें पैसे डालेंगे। तो लाइक यू नीड टू बी वेरी ब्रेव, बट हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तब जिन्होंने पैसे डाला दे आर एंजॉयिंग नाउ। तो any questions? So the best way is to do SIP, systematic investment, कि हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहो। So at every valuation you will be investing in market, and like in Indian market का track record है like in the worst case scenario Indian market has never given negative returns for 2 consecutive years. For suppose 2024 में इंडिया ने -5% हो गए इंडिया के स्टॉक्स, so definitely 2025 we are going to close in green, like we will give, India will make you some money। जबकि दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है। जापान had been consolidated like 30 years तक they didn't make a new all time high। Previously they made all time high in 1990s, now in 2024 they made a new all time high। so enjoy, like we can't purchase real estate now, but stocks and mutual funds are the thing for us to go in future। Hmm. How would you recommend like bigger companies like Nvidia or something, investing in Nvidia? But like they are so already expensive कि we cannot afford those stocks। अगर आप खरीद भी लोगे तो एक या दो खरीद पाओगे मुश्किल से मुश्किल। सो एंड ऑल्सो यू विल हैव मोर टेंशन कि वहाँ की न्यूज वी डोंट गेट एट रियल टाइम। लाइक उधर कुछ हुआ अगले दिन आपको सुबह पता चल रहा है कि अरे क्या हो गया। सो उधर सीईओ ने रिजाइन कर दिया। सो बट Nvidia का तो बहुत ही मतलब वो है, पॉजिटिव ग्रोथ है। हाँ ऑब्वियसली इट इज देयर, बट what best we can do is finding best alternatives in Indian market। Otherwise, there is one application called IND Money, IND Money, that helps you invest in US stocks. Or what you can do is there are some mutual funds which invest in Nasdaq, like US stocks. So you can purchase those mutual funds. So that headache will be off your uh, you will be tension free कि चलो मेरे को stocks नहीं देखना है। The mutual funds will keep investing on behalf of you in US stocks। Yep. So are, are we good to go or any more questions?
All clear? Yes. Yeah. So like nice talking to you guys. So I also create finance content on Instagram. So you can, if you guys are on Instagram, you can check out my profile at Pin Talks with Jan Saab. So you can check me out there, and you can message me anytime over there if you guys have any doubts. Okay. So let's end the class then. Bye bye. Bye.